Assalamualaikum grade 4, how are you? This is Mrs. Fatma Amir here. Hope to see you fine at home. I guess you people must be missing your school, your schoolmates, your teachers, but no problem class. We people are still connected to one another in the form of online classes and videos. Now let's come to the main agenda. Today I am going to cover the topic of English grammar. Fine, but let's come to the date first. Today the date is 15/12/2020 and the day is Tuesday. As grade 4, you people may remember that the last time we did the walk of nouns and common and proper noun we did. I gave you one of the exercises also to solve that, just to have a feedback how much you have understood. So today we'll cover the topic of the same nouns, but we are proceeding towards abstract and material nouns. Okay, now let's come to the abstract nouns first. What is an abstract noun? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द ऑपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं? कोई हार्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जस्ट लाइक चेयर, टेबल, ठीक है, पेन, बुक, दीज आर कॉन्क्रीट नाउन्स. सो यू कैन टच दोज थिंग्स. ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन्स आर दोज नाउन्स, द थिंग्स दैट यू कैन टच. ठीक है, उनको टच कर सकते हैं. यू कैन हैव अ फीलिंग वेदर दैट इज सॉफ्ट और हार्ड और कैसी है. ठीक है ना. सो दैट इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन. सो दिस इज़ द ऑपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन. ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट होता है. यू कैन नॉट टच दीज नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप टच नहीं कर सकते. यू कैन जस्ट फील दैम. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन ओनली बी थॉट और फेल्ट. यू कैन जस्ट थिंक अबाउट देम एंड यू कैन फील देम. एज इफ आई गेव यू द एग्जांपल थ्रू कॉन्क्रीट नाउन्स, ऑपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन्स, के यू कैन टच द कॉन्क्रीट नाउन्स. जैसे कि बोर्ड है, चेयर है, कॉपी है, ठीक है, पेन है, रबर है, रेजर है, शार्पनर है. यू कैन टच देम. ठीक है, बट देर आर सम ऑफ द थिंग्स जस्ट लाइक एंगर, लव, हेटर्ड, ठीक है, साइलेंस. यू कैन जस्ट फील दीज थिंग्स, यू कैन नॉट टच देम. सो दीज आर दोज थिंग्स दैट यू कैन जस्ट फील एंड जस्ट थिंक. ठीक है, दोज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच्ड. ठीक है, यू कैन नॉट सी दैम. कैन यू सी लव? आप कोई खास पर्टिकुलर देख नहीं सकते लव को, बट इफ़ यू सी द फीलिंग ऑफ लव इन एनीबडीज फेस, सो यू कैन जस्ट सी दैट. ठीक है, यू कैन जस्ट फील दैट. ठीक है, यू कैन नॉट टच दोज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द वर्ड्स दैट you cannot touch them. Okay, you cannot touch anger, hatred. Now you can see these pictures over here. This this girl seems to be sad. Okay, na sadness. Can you touch sadness? Touch नहीं कर सकते. But if you see the face of anyone sad, so you can just feel the thing. ठीक है. Now happiness. This girl is happy. This boy or girl, whatever you assume. This is I tried to make a girl. ठीक है. This is a girl and she is happy. So happiness is here on her face. So can you touch her happiness? No, you can just feel her happiness. ठीक है, आप किसी का चेहरा से देखेंगे, so you can feel that the person is happy. Now she is beautiful. I tried to make a beautiful picture. So beauty. Can you touch beauty? No, you cannot touch beauty. You can just feel. ठीक है, you can just think about beauty. कि हाँ ये खूबसूरत हो सकता है, और you can just feel about the beauty. So beauty is an abstract noun. ठीक है. Now this girl is angry. ठीक है ना. Anger. Can you touch the anger of any person? No, you cannot touch. You can just you can just feel that. ठीक है, कोई गुस्से में आपको महसूस हो जाता है, but you cannot, you cannot touch that anger. These all are the abstract nouns. These all feelings are the abstract nouns actually. Okay, now let's come to the material noun. What is a material noun? Material nouns are the material noun. Okay, material nouns are the names of materials out of which other things are made. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, यानी वो चीज़ें जिनसे आप दूसरी और चीज़ें बना सकते हैं, दे आर द मटीरियल नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, शुगर, सीमेंट, ठीक है, पेपर, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, मिल्क. सो थ्रू दीज थिंग्स यू कैन मेक अदर ऑफ द थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी मिल्क, मिल्क से और दूसरी चीज़ें बनती हैं. येस, थ्रू मिल्क वी मेक बटर, योगर्ट कहते हैं दही को, डेजर्ट्स कहते हैं स्वीट डिशेस को. सो वी मेक अ नंबर ऑफ थिंग्स थ्रू मिल्क. सो मिल्क विल बी मटीरियल नाउन. ठीक है. नाउ इफ यू सी कॉटन से क्या बनता है? थ्रेड बनता है, धागा बनता है, क्लोथ्स बनते हैं. देयर आर लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट इज मेड बाय कॉटन. सो कॉटन विल बी द मटीरियल नाउन. इफ यू सी शुगर, थ्रू शुगर वी मेक डेजर्ट्स. इससे भी मीठे बनते हैं, कॉफ़ी, टी. So many other things are made through sugar. So sugar will be the material noun. ठीक है. Water, अब पानी है, उससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं. टी, चाय बनती है. मील, लाइक खाना बनता है. Juices, like in some of the juices you need to add up some water. So different things are being made through water. So water will be the material noun. Okay, I guess class, your concept of abstract nouns and material noun must have been cleared. Now come to your notebooks. Fine, I gave you the homework the last time to do the activity of common and proper noun. I gave you an exercise and you had to write down these things in column
like I gave you to draw the column of common noun and proper noun, you had to do this, ठीक है ना. So now today you people have to write down the date again. Write down 15/12/2020 classwork, and the day is Tuesday. Write down again the heading of abstract noun. So you should remember, you can remember even this thing, ठीक है, that I explained you through the chart. Abstract noun is the opposite of concrete noun, ठीक है ना. Material nouns or anything that you can touch. Now abstract noun can only be thought or felt. You can just think about them and you can feel them. Abstract noun cannot be seen or touched. You cannot see them and you cannot even touch them, ठीक है ना. As I gave you some of the examples like anger, happiness, sadness, you cannot touch them, you cannot see them even. महसूस कर सकते हैं आप लोग, ठीक है. Idea, ठीक है, or thought. Like idea, it is the thing that you can think, ठीक है. Idea to be thought, and happiness is a feeling, ठीक है. So these are the abstract nouns. Now come to the material noun. Material nouns are the names of materials out of which other things are made. For example, cotton, cement, sugar, water, milk, plastic, silver, etc. ठीक है ना. कॉटन से मैंने आपको बता दिया. सीमेंट से और क्या क्या बनता है, घर बनता है, ठीक है ना. हाउस इज बीइंग मेड थ्रू सीमेंट, और इन डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ प्लेसेस सीमेंट इज बीइंग यूज्ड ऑन द वॉल्स, ठीक है. तो सीमेंट इज गोइंग टू बी मटीरियल नाउन. शुगर से मैंने बता दिया, वाटर से, मिल्क से बता दिया ना. प्लास्टिक, थ्रू प्लास्टिक वी मेक डिफरेंट like objects just like bottles, ठीक है ना. Sometimes the utensils, the dishes are going to be made through plastic. Silver से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं just like jewelry and different sorts of things. Paper can also be the material noun. So जिस चीज़ से भी दूसरी चीज़ें बनती हैं, those are material nouns, ठीक है. Now this is an exercise. You people have to attempt this activity. Write down homework here, write down exercise, write the nouns in the correct column. Now number 1 is always speak the truth. I have underlined the nouns here, so you have to, on the next page you have to make the column and you have to write down the correct type of noun in the correct column. For example, whether that is an abstract noun or material noun. अब बताएं truth कौन सा noun है. You cannot touch it, ठीक है ना. Wisdom is a gift of God. Wisdom, which sort of noun this is? Silver and gold are precious metals. Silver and gold. Through these things we make some of the things, ठीक है ना. So which sort of noun, which type of noun this is? Number 4 is we should drink water in 3 gulps. हमें पानी 3 घूंटों में पीना चाहिए. Gulps means घूंट, ठीक है. So water से we make some of the things through water. So which type of noun this is? Now number 5 is cleanliness is important in Islam, ठीक है ना. It's not Islam, it's Islam. Z sound is going to be there. So cleanliness, सफाई, ठीक है. So सफाई is, can you touch this cleanliness? Now think about this, which type of noun this is? The 6th one is the boy was rewarded for his bravery. Bravery कहते हैं बहादुरी को. So can you touch bravery? Now think on this thing and then you have to put them into the correct column. Okay class, next come to the very fresh page. Next page, fine. Write down date again, 15/12/2020. Homework in Tuesday. Make 2 columns से abstract nouns and material noun. I have not drawn the margin here. You people have to draw the margin also over here, ठीक है. यहाँ पे margin बनाएंगे and then you have to write down the abstract nouns in sentences में. What are the abstract nouns? जो भी हैं, ठीक है. Now you people have to write down the abstract nouns in this column and whatsoever the material nouns are there, जो भी material nouns हैं, you have to write down in this column, ठीक है. And draw a proper margin, ठीक है. And it should be equal in size. So I guess class 4, this much work is enough for you today, and your concept of abstract nouns and material nouns must have been cleared. Take a very good care of your health. Till then, Allah Hafiz from my side. Allah Hafiz.